What if 10 years down the line, a mother tells a kid, "Don't worry, son, if you're not good at studies, stick with sports. It will be fine." This is a platform not just to build awareness for some of our unsung sporting heroes, but also to contribute meaningfully to their journey. And this brand, if we can call it that, has brought together sporting legends, highlighted untold stories of grit, determination, and the achievement of athletes. This is Beyond the Finish Line. Hi, good evening. There are events and then there's the Beyond the Finish Line. How do I set this up? Devendra Jhajharia, who is India's only double gold medalist in the Paralympic Games 2004 and 2016. 12 years down the line, he wins 2 gold medals in javelin, 62.15, has given an interview today to our news agency saying he wants to break his own record and win a 3rd in Tokyo. Says in 2003, and I'll say this in Hindi because Devendra says it in Hindi and I'll translate. He says, "Dada, मैं जब stadium में जाता था, when I used to go to the stadium, and मैं देखता था कि international athletes would come with their sports scientists and trainers and physios and nutritionists and their team, and उनके पास TheraBand था, so they would train with a TheraBand. और मेरे पास तो वो सब कुछ था नहीं, मेरे पास वो सब कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं? How do I overcome this problem? So what I did was, मैंने कुल्हाड़ी ले लिया. I had taken an axe and I decided to cut a tree log 500 times each day so that my shoulder gets strengthened, equal to an Olympic gold medal, ladies and gentlemen. That is what we will celebrate tonight as part of what we call Beyond the Finish Line. Someone who made this possible in the last 17 years, starting in 2003, and has now made it a part of a revolution in distance running in India, leading this movement in this country. Put your hands together for a dear friend, Vivek Singh. The Tata Mumbai Marathon is recognized as one of the most watched, best known distance running events in the world. Tell me this story. We dreamt the impossible dream. We dreamt that people would run. We dreamt that people would run not just for themselves, but for something larger, for a cause they believed in. And this was all when nobody ran in India. The story of the Tata Mumbai Marathon, the story of the Mumbai Marathon, is the story of India's journey from spectator sport to participative sport. Today, you'll be happy to know that the fastest growing participative sporting nation in the world is India. A simple movement that got people to lace up their shoes and get out on that road has got a country moving. From 2 races in 2003, like Boria says, to 1,600 timed running events today. From charity, we managed to struggle and raise 1 crore of rupees in year 1. In 2019, the Mumbai Marathon alone raised over 40 crores for charity. So what is this? Boria asks, what is this Tata Mumbai Marathon? I don't know. It is what each and every one of you make it. It's something living, something breathing. It is something that's going to transform India, transform the mindset of India. It's going to transform the people of India. It's going to transform the way people see India, step by step. Why Beyond the Finish Line? You've already got a property, the Tata Mumbai Marathon, that you can showcase to the world. What does Beyond the Finish Line mean to you? Sport can change the perception of society. We want to showcase fabulous athletes that we are so fortunate to be graced by. Take back their stories, and wherever it's possible, open your heart to sports. Vivek Singh, thank you very much. Thank you.
Please, can you come on stage? Manoj Sarkar, Dyuti Chand, and Karnam Maleshwari. आपसे शुरू करता हूँ भारत में महिलाएं वेट लिफ्टिंग ये तो होता नहीं था आपने कहाँ से वेट लिफ्टिंग शुरू कर दिया, जाके ओलंपिक मेडल भी जीत लिया आपने? मैं एक आंध्रा में एक श्रीकाकुलम के पास आमदाल वलसा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरा फर्स्ट जूनियर नेशनल में 1990 उदयपुर में मैंने खेला है। जब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल जूनियर नेशनल मैंने खेला तो वहाँ 9 नेशनल रिकॉर्ड के साथ मेरा करियर शुरू हुआ, मेरा फर्स्ट कंपटीशन में ही। उसके बाद फिर कैंप्स में हम लोग गए, फिर रेगुलरली हम लोग ट्रेनिंग करते थे। 92 बैंकॉक में हम लोग एशियन चैम्पियनशिप में मेडल जीते हैं और 93 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए हम लोग जा रहे थे और श्योरली मेडल जीतने जा रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भी हमारे पास फंडिंग नहीं है, हम आपको भेज नहीं सकते। देखिए हमारे टाइम में लग्जरी तो बिल्कुल भी नहीं था, हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके जाते थे। अगर जाते थे भी कैसे, कल अगर मेरा मैच है तो आज इवनिंग पहुंचेंगे, मैच ख़त्म करके अगले दिन वापस आएंगे। मेरा फादर ने मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरी मदर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट की, क्योंकि हम लोग काफ़ी गरीब घर से बिलोंग करते थे। एंड मदर को कहीं से ये था कि भी अगर आप स्पोर्ट्स में अगर अच्छे करते तो जॉब मिलने में ज़्यादा आसानी होती है। तो इसीलिए मम्मी सपोर्ट करती थी कि चलो ठीक है, जॉब अगर लड़की है जॉब मिल जाती है, अपने पैरों में खड़े हो जाएगी तो लाइफ उसका सेट हो जाएगा। तो हमारा जो एक सोच जो थी वो कि भी एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए। द्युति यार आप इतना बताओ मुझे, हाइपर एंड्रोजेनिज्म से पब्लिक प्रोक्लेमेशन ऑफ, आप अंदर इतना स्ट्रेंथ आता कहाँ से है? बेसिकली आपने जो पूछा कि ताकत कहाँ से आता है, ताकत ऑटोमेटिक आ जाता है। जब इंसान को कोई मारने के लिए आता है तो ऑटोमेटिक ऐसे हाथ दिखा देते हैं। तो ऐसे मेरे साथ जब बुरा हुआ 2014 में, एशियन गेम कॉमनवेल्थ गेम दोनों के लिए सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में मुझे कहा गया कि तुम एलिजिबल नहीं हो कंपटीशन के लिए, तुम नहीं जा सकते हो। और कारण वजह यही था कि मेरे अंदर में हाइपरजम ज़्यादा था, पुरुष हार्मोन। तो उस टाइम में इतना मैच्योरिटी नहीं थी, मैंने ज़्यादा उम्र भी नहीं, 17+ चल रहा था उस टाइम में। क्या रूल रेगुलेशन है, क्या चीज़ है, मुझे इसका जानकारी कुछ भी नहीं था मेरे साथ पास में। जब इमीडिएटली मुझे रुका गया तब मुझे पता चला कि मन में ख्याल ऐसा आया कि शायद डोप टेस्ट हुआ है, इसीलिए शायद मुझे डोप के बजाय जाने के लिए नहीं दे रहे। लेकिन बाद में सुबह सुबह जब वो न्यूज़ देखा कि सारी हेडिंग न्यूज़ पेपर में आया कि द्युति का जेंडर टेस्ट हुआ था, वो लड़की नहीं है लड़का है, इसलिए लड़की के साथ भाग नहीं ले सकते। तो ये पढ़ के मुझे बहुत दुख लगा, अचानक ऐसा कैसे हो गया। मैं काफ़ी सालों से खेल रहा हूँ, 2006 से स्पोर्ट्स शुरुआत की थी और पहला इंटरनेशनल मेडल में 2013 में जीता था, जो पुणे में हुआ था एशियन चैम्पियनशिप। इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेला मैंने, पहला भारतीय महिला के साथ से फाइनल में प्रवेश किया था मैंने। और यूथ चैम्पियनशिप में भी मेडल भी गोल्ड मेडल भी हासिल किया था 2014 में। जब ये सब न्यूज आया तो सारे लोग ने मुझे दूसरा नज़र से देखना शुरू किया। बहुत कष्ट हुआ, सारी दुनिया में सारी पब्लिक में मुझे ब्लेम करा गया, बहुत कष्ट हुआ इस टाइम में। कोई भी मानने के लिए नहीं तैयार थी कि अचानक ऐसा कैसे हुआ, क्या चीज़ है क्या नहीं था। फिर भगवान के आशीर्वाद से और मेरा मुझे जो सपोर्ट किया है ज़्यादा, पायोसिन मित्रा मैडम जिन्होंने हाइपरजम की साइंटिस्ट है, तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने बताया कि द्युति आईएफ के रूल के हिसाब से ऐसा रोल है, डोप टेस्ट होता है और हाइपरजम टेस्ट होता है, और इसी टेस्ट के हिसाब से किसी के अंदर में हार्मोन ज़्यादा मिल जाता है, स्पोर्ट्स में स्कोर निकाल देते हैं, तो इसलिए तुझे भी निकाल दिया गया है। लेकिन तू लड़की है, तू लड़का नहीं है, लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो फिर सब ने मुझे सपोर्ट धीरे धीरे देने लगी। फिर मैडम ने मुझे एडवाइस भी दिया कि हम इस रूल के ऊपर केस अप्लाई करेंगे तो हम फिर जीत के ट्रैक को वापस आ पाएंगे। लेकिन इसमें जीतने का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक जितना सारी एथलीट पकड़ के सारी लाइफ टाइम बैन हो चुकी है, कभी ट्रैक को वापस आए नहीं है। इसका और दूसरा इलाज है, आप मेडिकल में जाके कोई सर्जरी वगैरह कर सकते हैं। तो मैं मेडिकल जब गया तो शरीर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ये तो हम कर देंगे, लेकिन तुम खेलने के लिए एलिजिबल होगी या नहीं हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये चीज़ करने के बाद आपको रिकवर होने के लिए 1 साल से ज़्यादा टाइम लग सकता है और इससे बीच तुम रिकवर नहीं कर पाओगे। तो फिर पूछा कि तुमने जीने के लिए कोई दिक्कत हो रहा है? मैंने बोला नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं, खेल तो 5 साल कि 6 साल तक करते, ज़्यादा सारा ज़िंदगी तक तो नहीं है। तुम जीना चाहते हो या तुम खेलना चाहते हो? मैंने बोला कि
खेलूंगी तो फिर जीऊंगी, नहीं खेलूंगी तो फिर कैसे जीऊंगी मैं? Manoj, you started your career, तुमने अपना career शुरू किया था playing with able-bodied athletes. And thereafter, Laksha's father told you about para-badminton. From there to almost participating in Tokyo, fingers crossed. Can you tell me about the story of para-badminton in India? Because, and has para-athletics, para-sport really moved in the last few years? बेसिकली आप सही कह रहे हैं कि 4 to 5 इयर्स में बहुत प्रमोशन मिला हम लोगों को, लेकिन ये फैक्ट है कि अभी भी लोगों को नहीं पता पैरा के बारे में। इंडिया के सारे जितने भी एथलीट्स हैं, एबल से लेकर पैरा तक, बेसिकली मेरा मोटिव ये रहेगा कि जितने भी पैरा प्लेयर्स हैं या जितने भी पैरा लोग हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सब स्पोर्ट्स ज्वाइन करें। बिकॉज अगर हम स्पोर्ट ज्वाइन करते हैं तो उसका सबसे बेस्ट मोटिव ये रहता है कि हम लोग फिज़िकली फिट रहेंगे। मेरा एक लेग वीक है, आप देख सकते हैं, अगर मैं अपना स्पोर्ट्स नहीं खेलूं तो शायद मैं व्हील चेयर में चलूं, जो मुझे मंजूर नहीं है। तो थैंक यू एंड थैंक गॉड कि मैं बैडमिंटन से जुड़ा हूं और आपके सामने आज चल के आ रहा हूं और चल के बैठ रहा हूं। जब मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट करा, कांट बिलीव कि मैं रोता हुआ गया मम्मी के पास। सब लोग खेल रहे थे और मैंने कहा कि मम्मी मुझे रैकेट चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बहुत पुश करने के बाद ऑलमोस्ट 15 to 16 डेज़ बाद उन्होंने मुझे 10 रुपये किसी से उधार लेके मुझे रैकेट खरीदने के लिए पैसे दिया। और मुझे नॉलेज की कमी थी, तो एक छोटा सा रैकेट आता था, स्मॉल रैकेट बिल्कुल, तो वो मैंने पुराना, जबकि न्यू 10 रुपीज़ का आता था, मैंने पुराना ख़रीदा 10 रुपीज़ से, क्योंकि नॉलेज था नहीं। और मम्मी ने बीड़ी बना के, मटर तोड़ के वो पैसा उनको चुकाया। वो दिन अगर याद करता हूँ तो मुझे रोना आता है। और आज इस मंच पे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतने हडल्स थे लाइफ में कि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। This is something that, this is my favorite piece of trivia about Karnam Maleshwari. Talk about your son. सिडनी ओलंपिक्स में जो वो 137 जो मेरे हाथ से छूटा, ठीक है, वो मेरा दिल और दिमाग से ये ऐसे आवी था, वो गया ही नहीं। फिर उसके बाद मैं कंसीव हुई, तो फिर मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो सीजरियन से हुआ था, एंड वो जर्क पोजीशन में था, जो मैंने मिस किया। वेट लिफ्टिंग का जो ग्रिप होता है ऐसे होती है, ये अंगूठा अंदर को होता है ऐसे पकड़ के, एंड हैंड्स ऊपर थे उसके। I think that is a fabulous note on which to end this session. Ladies and gentlemen, three extraordinary people. Beyond the finish line is all about them. Put your hands together. Manoj Sarkar, Karnam Maleshwari, and Dyuti Chand. Absolutely magical. Perhaps the part of this program that a lot of you have been eagerly waiting for. She's part of the Magnificent Seven, one of the greatest gymnasts this world has ever seen. Olympic medalist, 7 Olympic medals, gold medal, multiple world championship medals. One of the most decorated Olympians in the history of international sport. Put your hands together for the one and only Shannon Miller. You know, what we really want is, Shannon, for you to take us backstage. Tell us what really goes on into making of a Shannon Miller. It's a long story. It's a long road. I think any athlete will tell you, any Olympian, any professional athlete will tell you it doesn't happen overnight. It starts with getting involved. It starts with that first step. I was introduced to gymnastics when I was 5 years old, not because I had ever seen the Olympics, not because I even knew what the sport of gymnastics was. I was just ruining my parents' furniture. So they wanted me doing something else, and they signed me up for this thing called gymnastics, and I fell in love. It was from the first day, this opportunity to go into this big kind of warehouse where they had mats and foam pits and bars, and you could swing and you could turn upside down, and nobody yelled at you. You just got to play, and I fell in love, and
really just fell in love with the challenge of the sport. The one thing that's great about gymnastics is you can never reach the top, because if you learn every skill, you make up a new one. And so I love that challenge. I love trying new things. I loved forcing myself to outdo myself each step of the way. And at 9 years old, I decided I really wanted to start competing. I'd never competed on a team before, and I wanted to figure out what that was like. So my coach had me start competing, and again, it was just that love of the excitement and the adrenaline rush and the opportunity to show people what I had been training all of that time. And then it was just kind of stepping stones from there, the state competition, national team, and then my first international competitions. There was tremendous pressure on you. There were injuries that were happening side by side. Tell me about how someone who is actually a legend with multiple Olympic medals, etc., how do you deal with failure? Failure is part of it. I think when we watch the Olympics, you'll watch the Olympics in Tokyo this year, this summer coming up, and you will see incredible stories of athletes winning gold medals, and that is amazing. It's fantastic. It's so wonderful. But that's not the story. The story is all of the failure that led to that medal, all of the challenges and the missteps and the mistakes and the falls and the face plans and everything that you go through in order to just make an Olympic team. One of my biggest setbacks came 10 weeks prior to my first Olympic trials in 1992. I was on the uneven bars and I just made a mistake. And I came down wrong, broke and dislocated my left elbow. And every Olympic dream, for most everyone looking at that, it vanished. Oh, she can't come back from that. There's no way. You don't have time. And my coach looked at me coming out of the hospital the next day after surgery. He looked at me and he could have said a lot of things. He could have said, "I'm so sorry. Well, maybe we can stay another 4 years. Maybe we can try for another competition." He didn't say anything like that. He looked me square in the eyes and he said, "I guess we've got some work to do. I'll see you in the gym tomorrow." And it was that moment of clarity for me that he believed in me. And I think that allowed me to believe in myself. And that's a moment I look back to often when I face any challenge in sport and in life, is if we believe in ourselves and if we're willing to do the work, when we're passionate about it, we're willing to take that next step, anything is possible. Incredible. Absolutely incredible. And someone who has done that for India. You know, when she was actually competing on the 15th of August 2016, she said 0.12, this was 0.06. And none of us will ever forget. I met her at about 7 p.m. in the evening, Rio time, if I'm right. And she said to me, and we were all saying, "Extraordinary performance from you, Deepa Karmakar." And she said, "Dada jano to, you know, fourth medal hoy," which means a fourth position is a fourth position, a medal is a medal. We don't look at it that way, Deepa Karmakar. We look at it that finally we have somebody in India who can make an Olympic Games first, make an Olympic final second, almost get a medal third, and inspire a generation fourth. Ladies and gentlemen, put your hands together. Till Dynamo, Deepa Karmakar. Come on. Welcome. My husband asked me earlier when I was talking about Deepa and the vault, the Prudnova, which is kind of a my era skill that I did not do. And I assured him that no, I didn't even attempt it because it is so difficult. But it is. It's basically a 2.5 flip forward with a blind landing. And that may not mean a whole lot. Let me just say this. It's called the vault of death. So that's probably as much as you need to know. But it is incredibly difficult. Only 5 women in the entire world, 5 in the entire world in world history have landed this vault, and you've got one sitting here.
Absolutely, and thank God someone of her caliber said it, and not someone like us from the media. Now, why did you do it? How did you do it? सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज प्रोदोनोवा से स्टार्टिंग है क्योंकि ये बहुत चैलेंज था हमारे लिए करने के लिए क्योंकि जिम्नास्टिक्स को सब सर्कस बोलता था तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कहीं भी जाते थे जिम्नास्टिक्स करते तो वो क्या सर्कस होते हमने बोला नहीं तो अभी सब जिम्नास्टिक्स जानते वो प्रोदोनोवा के लिए वो स्पेशली थैंक्स मेरे कोच नंदी सर क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें जिम्नास्टिक्स को अगर ऊपर लेके जाना है तो वही है क्योंकि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इवेंट वॉल्ट है और तुम प्रोदोनोवा करोगे तो शायद तुम्हें मेडल भी आएगा और शायद जिम्नास्टिक बहुत लोग जानेगा. When you see someone like a Deepa coming out from a country like India which has no tradition, as someone who is a real legend like you, what does this mean for the sport? And I told this to Deepa. I was very fortunate that people watch my video and have followed my career. It is incredible to have someone in the sport, like when I was growing up, a Mary Lou Retton, a Nadia Comaneci, and Olga Korbut, who was doing amazing things. It is inspirational, and it makes you believe that it is possible. And that's what you have done for India. You have made every little girl and every little boy out there believe that they can be a part of gymnastics as a sport and that they can, if they work hard, compete on the international and the world stage. And you have had such a big hand in that. And I know you're not finished. So Absolutely not finished. We will come to that. But a follow-up question before I come to Deepa again, Shannon. I mean, world championship medals, Olympic medals, with each medal, the expectation rises. How does an international athlete like you, and I'm sure this will help her, this will help Dyuti, this will help Manoj, how do you deal with pressure? I grew up in a time that was probably maybe a little bit easier. Social media didn't exist. So I think you didn't have the day-to-day constancy of knowing that everything that you were doing was examined. And I think that allowed you to go in the gym and just train and just work and kind of block out all of the other stuff and show up to the competition. And my goal at every competition was not about a medal. My job is to go out on every event and get as close to that 10.0 as I possibly can. We finally have an Olympic, someone who's made the Olympic final came fourth, multiple competitions at the international level, you won medals. Have you changed after Rio? हाँ पहले से बहुत चेंज हुआ क्योंकि पहले जिम्नास्टिक्स करने पेरेंट्स इतने सारे बच्चे को नहीं भेजते थे बट अभी आप कहीं भी जाओ दिल्ली बॉम्बे त्रिपुरा और पूरे नॉर्थ ईस्ट और जितने भी छोटे छोटे शहर है सारे जगह इतने सारे गवर्नमेंट सेंटर भी है साथ में प्राइवेट सेंटर बहुत खुले जिस कारण पहले अगर 500 पार्टिसिपेंट होते तो अभी 1000 हो गया तो हमें बहुत अच्छा और सबकी जितने भी बच्चे आते हैं सबको ऐसे लगते हैं कि हमें अभी ओलंपिक जाना है वहाँ से मेडल लाना है और ऐसा दिन आए कि हम भी ऐसे जैसे 7 ओलंपिक मेडलिस्ट हम मेरे साथ बैठे हमारे सामने तो ऐसे क्योंकि हमारी गेम ऐसा है कि हम एक साथ 5-6 गोल्ड भी ले सकते तो शायद इंडिया में भी ऐसे कोई दिन आएगा ऐसे 10-12 ओलंपिक मेडलिस्ट जिम्नास्टिक्स में हमारे साथ बैठे. Can we have all of my athletes on stage along with people from ProCam who are organizers, the backstage of ProCam, and signing off for tonight from me. Thank you very much for being a wonderful audience.